Okay, so so let's recall the goal of machine learning, or the goal of machine learning was to construct a function that classifies the training data correctly, so it can generalize to unseen test data. Okay, so this was our main goal. Now इस चीज को now let's assume कि हमारे पास जो है to achieve this goal, ये machine learning का goal है, ठीक है? This is the goal of machine learning. So if you see what we are looking for is, this is the main thing, f. So let's say if we are talking about, if this is if the function is f, ठीक है? This is what we are looking for, and इसकी जो inputs हैं, inputs can be इसकी जो inputs हैं for this function, they can be, inputs can be like vectors, ठीक है? और ये matrices भी हो सकते हैं, and they can also be tensors. We discussed this previously, कि matrix, vectors or tensors में क्या फर्क है? Can anybody tell me? For example, this can be a vector 1 2, or the matrix can be a mix of these two, 3 4 5 6, so on. Or the tensors हैं, they basically will be let's say 1 2, and then we have 3 4, and then we have another 3 6 and 7 8. Okay, so we discussed initially, और हमने ये discuss किया था, we decided that कि जो हमारा basic unit होगा, we call it the unit of let's say machine learning, कि हमारी understanding के लिए we have defined it like this. So in this case, हमारे पास जो inputs हैं, basically all these vectors, matrices and tensors, basically what they are our ये सारे के सारे जो हैं, they are basically the इसको हम कहेंगे, these are the samples, और इन samples को हम नाम दे देते हैं, let's say they are categorized as V. So V can be a vector, we can be a matrix, we can be a tensor, but this is the input. So our input is, let's say V. Okay, अब इसके बाद होगा क्या? इसके बाद होगा ये कि the output, the output is let's say output जो है, this is output is computed. Output is computed classification. Output is computed classification. Output is computed classification, and let's call this as W. ठीक है? W कह सकते हैं, omega कह सकते हैं, and or you can say Y. Y is better. I think I should remove it. और W को बाज़ वक़्त हम weight भी ले लेते हैं. So let's call it Y. So what we are looking for is so we can write कि हमारे पास this will be a Y, which is basically a function which is applied on the tensor or whatever the input is. So this is our input data. Input, let's say data in the form of vector or matrix or tensors. ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, or tensors. Okay. Right. So how many are there?
I should take the attendance now. Last. स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, sir. Let's take the attendance. Or this is of A. Okay, please, Hasib Ahmed, Maz, अपना नाम लिया करें. हसीब को कॉल किया. Present, sir. प्रेजेंट ना कहें, अपना नाम लें. हसीब कहें. Hasib. माज. Maz present. हमजा. शहाब. Shahab. अलीजा. हमदा. present. मान. Usman present, sir. हसान. Hassan. राना हुमायूं. Present, sir. मोहम्मद हुसैन. Hussain. तलहा. मिशल. अली इर्तजा. Ali. आयशा जमाल. हुमायूं जावेद. हुमायूं. हारिस लाखानी. सर तलहा इकबाल प्रेजेंट. हारिस. अनस मुमताज. शहरियार. तलहा. नबा. Talha present. Present, sir. Okay. Sir, Aisha Jamil present. Sir, Hamza Ahmed Khan is also present. Okay. Okay. Coming back to the discussion. Okay. So, इसका मतलब है what we can write here is the so the simplest learning function. Simplest learning function. What a simplest learning function can be? The simplest learning function can be, let's say, y is equals to a times this data v. ये आपके पास data है, and this a is a kind of transformation that is applied on the data. Okay, this is what we did in. और ये चीज हमने किस में की थी? Anyone can tell me? ये चीज हम पहले कर चुके हैं, this transformation. If you remember, for example, we did find MC by using A transpose A inverse A transpose B, right? Regression. Regression was what about? इसमें आपके पास एक तरह से ये पूरा का पूरा एक मैट्रिक्स ही बनता है. अगर इसको सॉल्व करेंगे तो this will become a new matrix. एक मैट्रिक्स होगा, and this matrix is multiplied with this B, and then it gives us the M and C values.
So this is the simplest form, and and this A is, अब इस A के बारे में हम थोड़ा सा और लिख लेते हैं, so that we formalize the things, where A is a matrix, right? A is a matrix. I should remove this right now, otherwise this may spoil my definition right now here. क्योंकि हम neural network की बात कर रहे हैं, this was not the regression is not the complete learning function that we are talking about. ठीक है, so वो limited एक definition थी, इसलिए मैंने उसको मिटा दिया. So A is a matrix whose entries are the weights, and these weights are are learned by data. ठीक है. So what we can frequently mention is कि ये जो आपके पास अब function था basically, so the learning function was, हम learning function को ऐसे लिख सकते हैं कि it was basically f is equals to a times v, and sometimes ये जो learning function है इसमें in some cases we also get some kind of a Bayes vector. So in some cases f is equals to a v plus b. अच्छा, यहाँ पे b जो है, this is the Bayes vector. ठीक है, so far so good. Okay. But what do you think? ये जिस तरह से हम बात कर रहे हैं अभी, ये simplest case था. Practically जो real world challenges हैं in the real world situations may require more than simple linear function. अच्छा, ये जो function हम लिख रहे हैं, basically I'm talking about the learning function. ठीक है, so what should we do in that case? Think about some kind of a non-linear function. Basically linear or non-linear function, learning function क्या है कि you provide a data and it gives us some value. So we need to construct some kind of the construction of a function, जो पिछली वाला जो construction थी हमारी. So the construction of the construction of, I should write it like this, so construction of f from a line, जैसे एक ये line है, ठीक है, this was transforming, will move towards some अच्छा, इस लाइन में जब नॉन लिनियरिटी ऐड होगी तो what we are doing is, जैसे क्लासिफिकेशन एक एग्जांपल है, tell me something about machine learning. Machine learning में आपके पास input data है on one side, ठीक है, let me draw it here like this one. So we will provide input data, और जो machine learning है, it will provide us some output. So if I am talking about के जो input may be a picture, for example,
अब अगर आप एक पिक्चर दे रहे हैं तो उस पिक्चर की किसी किस्म की क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, उसको क्लासिफाई करें, जैसे गैसेट डिटेक्शन है या कैट है और कोई और मुख्तलिफ पैट्स हैं, उनको आपने पिक्चर्स दी हैं, सो यू प्रोवाइड फॉर एग्जांपल फ्यू पिक्चर्स, 4 पिक्चर्स, ठीक है, आपने लेट से कहा ए और आपने फिर लिखा उर्दू में मैं कोई चीज़ें लिख रहा हूँ, फिर आपने लिखा यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे आपने लिखा रोमन में 2 लिखा। नाउ दीज 4 पिक्चर्स आर प्रोवाइडेड और अब मैं ये चाहता हूँ कि ये क्लासिफाई करे किसी तरीके से कि मैंने कौन सी लैंग्वेज में इनपुट दी है, ये नंबर्स हैं या क्या है। सो व्हाट आई नीड इज मुझे किसी तरीके से इनको, देयर इज नो ट्रांजिशन, अगर मैं यहाँ इसको क्लासिफाई करता हूँ किसी तरीके से कि लेट्स से कि यहाँ पे शुरू में जो है दिस इज उर्दू और दूसरी जो चीज़ है वो नंबर्स हैं, फिर तीसरा जो है वो रोमन नंबर्स हैं फॉर एग्जांपल एंड सो ऑन। सो देयर इज नो कंटिन्यूटी बिटवीन दीज टू, मुझे बाकायदा तौर पे कुछ सेपरेशन सोचनी पड़ेगी, ठीक है। दिस लाइन विल प्रोवाइड मी अ कंटिन्यूअस आउटपुट। तो ये सेपरेशन आप किस तरह से करेंगे कि मैं स्विच करूं, इट्स लाइक माय आउटपुट इज नॉट कंटिन्यूअस, आई नीड टू स्विच। अगर मुझे स्विचिंग करनी है आउटपुट के अंदर कि या तो वो एक कैटेगरी में होगी राय करेगी या फिर दूसरी कैटेगरी में या फिर तीसरी कैटेगरी में, ठीक है। सो इन दैट केस ये जो लाइन है, दिस लाइन हैज टू कन्वर्ट समथिंग लाइक दिस, और सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर मैं सिर्फ 2 की कैटेगरीज कर रहा हूँ, जैसे लेट्स से कि कॉमन एग्जांपल है कैट की और डॉग की, आपने पिक्चर दी और आप कैट और डॉग में डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं। सो इन दैट केस व्हाट आई नीड इज मे बी इट विल बी द ऊपर इस तरफ से कैट और डॉग और यहाँ पे अब आपके पास कुछ पिक्चर्स होंगे, ठीक है। ये पिक्चर नंबर 1 है, ठीक है। So it will be like picture 1, then picture number 2, picture number 2, picture number 3, picture number, let's say this is picture 4, this is picture 5 and so on. तो अब होगा क्या कि अगर आपके पास पहली पिक्चर डॉग की है तो it should classify here या here, ठीक है, कहीं यहाँ पे क्लासीफाई करेगा, सेकंड है तो वो यहाँ क्लासीफाई करेगा, थर्ड है तो फिर वो हो सकता है वो डॉग की पिक्चर है तो यहाँ क्लासिफाई करे, फिर यहाँ क्लासिफाई करे, एंड देन सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। लेट मी ड्रॉ इट नीटली हियर अगेन। सो आपके पास जो है ना वो स्विचिंग होगी, लेट्स से देयर आर 2 लाइंस, दिस इज द फॉर द डॉग एंड दिस इज फॉर द कैट, तो और these are the different pictures, and then it will switch to this point, then coming back here, going here and continue like this. So अब आप ये देखिए कि this line जो हमने पहले बनाई थी ये आउटपुट की, अब फंक्शन जो आपके पास था f, वो एक लीनियर फंक्शन के बजाय वो किसी तरह से इस तरह से डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल होगा. So this construction of the function line will move towards something like this. ठीक है. So these are called S-shaped graphs. Okay. और इनमें फॉर एग्जांपल अब इसमें मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ्स हैं. फॉर एग्जांपल example of such function can be sigmoidal function, जो कि हमको इस तरह से that can help us as an activation function. एक sigmoidal function है. और sigmoidal function का benefit क्या है? Sigmoidal function is basically Sx equals to 1 upon 1 minus e to the power minus x. इसका फायदा क्या है? इस sigmoidal function का फायदा ये है कि अगर आपके पास जो input data है on this side, let's say कि अगर मेरे पास ये x है input and I'm providing minus 10, minus 5, then 0, then 5, then 10 and so on. So I should use some kind of a value. So x आपके पास जो है, अगर मैं MATLAB में अभी इसको करना चाहूँ तो in MATLAB what I should do is कि मैं इसको provide करता हूँ some kind of
data minus let's say 20 colon एक का step मैं use करता हूँ और 20 तक, ठीक है. So x data है and then I will calculate s as 1 divided by 1 minus e to the power exp. MATLAB की command में इस तरह से इसको enter करो and then I should plot s comma sorry what should I do? Plotting में मैं क्या करूँगा? I think it should be x comma s, ठीक है. So let's do this example here. Or I think x is equals to minus 15 colon 1 colon 15. ये हमारे पास x आ गया and then I will calculate this one divided by what was that? Yes, क्या value थी इसकी? 1 minus exponential this, so 1 minus exp of minus of 1. Sorry, क्या mistake कर रहा हूँ मैं? Anyone can help me? जी, ये function है, मैंने उसको can you tell me क्या what is the problem here? माइनस एक्स आएगा 1 की जगह. Very good. कौन था ये? Who is this? Hasib? Hasib, very Yes, good. Good. Okay, so यहाँ पे हमें sorry minus x आना चाहिए. Because a dot should come here. Yeah, dot operator needs to be done so that के वो point by point calculation. So we have x, we have s. अब मैं इसको plot करके देखता हूँ x comma s. So now I have, ये तो सही नहीं आया, क्या गलती कर दी मैंने? नहीं, ये ऐसा क्यों आ रहा है? अच्छा, क्या गलती कर दी? ओह, this is plus basically. Function ही गलत लिखा मैंने. This is plus. So it should be plus here. अब देखते हैं. It is plus. So now we have x, we have s, और अब मैं इसको plot करता हूँ तो we have this value. See, अब आपके पास जो है, this can make all the values on the left side. ये they will provide me a 0 or for example a dog category जो और right side पे जितनी भी आ रही हैं आपके पास उसको +1 में convert करेंगे या cat category for example. So when we have to make some kind of decision making, तो उसमें इस तरह के S shaped जो graphs हैं like this one, they help us कि ये point out करते हैं कि ये आपके पास ये एक category है, category number 1, ये decision making, and this is category number 2. By the way, यहाँ पे एक direction में मैं point करना चाहता हूँ कि think about this just as, अच्छा ये अब आपके पास जो है neural networks में, allow me to build few neural networks here. ये एक layer input 3 है, फिर इसके बाद second में 2 है और उसके बाद फिर एक final layer होगी और they are all. अब ये जो function अभी आपको मैंने बना के दिखाया है, ठीक है, this may be here, ये इसको feed in कर रहा होगा, ये इसको feed in कर रहा होगा, this will be feeding here, ठीक है, and so on. और यहाँ, so this जो अभी मैं आपको function बना के दिखा रहा हूँ, this should come here, और इसके साथ साथ ये activation function आपके पास यहाँ पर भी होंगे. यहाँ पे आपके पास internal data है, ये सारा का सारा internal data होगा जो कि V है. These are the points जहाँ पे आपके पास functions apply हो रहे होंगे. Function 1 होगा, यहाँ पे function number 2 होगा, यहाँ पे एक function number 3 होगा, इसी तरह से आपके पास function 4 है, function 5 है, and finally we have the function at output.
So this function is basically जो आपके पास आउटपुट का फंक्शन होगा, this is basically a combination of all these functions. और यहाँ पे हर एक के साथ अपने वेट्स होंगे, W1 है, फिर इसका W2 है, and the W3 will be there, W4, W5, W6, ठीक है. Now जो चीज़ मैं अभी हाईलाइट करना चाहता हूँ वो क्या है कि if I see this thing as digital 0 और digital 1, और दूसरी चीज जहन में रखें कि ये जो आपके पास ये जो फंक्शन है, they will be actually on every point. So you can just like the logic we develop, एक digital logic से 1 0 से आप develop कर सकते हैं बहुत सी possibilities. So 1 0 at the output can come here, 1 0 can come here, 1 0 can come here. तो ये 1 0 की combination जो आपके पास sigmoidal से power आती है, this help us a lot. ठीक है, 1 0 1 0 1 0. So sigmoidal functions जो हैं, they are basically very helpful. Now यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है? अच्छा, अब with this basics अब हम करते क्या है, हमें बेनिफिट क्या होगा इन सब चीज़ों का कि अच्छा दूसरा फंक्शन है, पहला एक फंक्शन तो आपको हमने बता दिया, दूसरा फंक्शन कौन सा है? नाउ we have 10 minutes. So eventually what we have is we will have something like कि we have at input, आपके पास input पे v है, v may be multiplied with some kind of a b matrix. ये जो ऑपरेशन है, ये कौन सा ऑपरेशन है? This is a linear operation, बिल्कुल रिग्रेशन की तरह. It may be there might be some kind of a bias here, अभी हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, but this is whole linear operation. अब इस linear operation के ऊपर what I can do is, इस linear operation पे अगर आप का जो न्यूरॉन है, that applies an activation function here which is let's say sigmoidal. तो sigmoidal की वजह से ये आपके पास नॉनलीनियरिटी ऐड होगी, and then this nonlinear function is feeding into another one. ये जो nonlinear term, अब this function is now, it's a very good combination of linear decision making and linear calculations. अब ये जो function है आपके पास, this is now becoming non-linear क्योंकि इसने एक तरह से decision making की है, ठीक है, some kind of किसी चीज को आप decision making आपने कर दी. यहाँ internal आपके पास जो था ग्राफ था इनपुट और आउटपुट का, that was a straight line, right? And then we have the outside, और अब दोबारा से आप किसी जगह जाएंगे and then it will be another matrix A can be applied here. ठीक है, इस स्ट्रक्चर पे हम दोबारा आएंगे इंशाल्लाह जब हम आगे एल्गोरिथम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे. For the time being अब हम मूव करते हैं the second important function. What you have found is ये जो आपके पास लॉजिस्टिक फंक्शन था पिछला, जो लॉजिस्टिक फंक्शन इसको हम कहते हैं कि what are the reasons that S-shaped functions are called logistic normally? कोई मुझे इसका कोई जवाब बताएगा? Usually S-shaped functions, because one simple answer might be कि they basically provide the way out, या एक तरह से आपको आउटपुट देते हैं, या they actually categorize, प्लस या माइनस में आपको कैटेगराइज करके देते हैं, ठीक है. और so one of the logistic function जो बहुत extremely simple है, that is this one. Very simple function जो 0 है एक पॉइंट तक, और उसके बाद this becomes like linear.
So this is basically called, इसको short form में हम लिखते हैं RELU, and this is basically called rectified linear units. These are small terminologies, और ये जो elements हैं, they are going to help us mathematically. ये और कुछ भी नहीं है, ये इस तरह का फंक्शन है, और मैथमेटिकली आपके पास ये फॉर एग्जांपल x आपके पास जब तक इस 0 से कम आएगी तो it will be 0, otherwise it will just pass on the input value, the output. So mathematically we write it RELU as the maximum of या तो वो 0 होगा या फिर वो x होगा, ठीक है. ओके, नाउ हमारे पास जो दो फंक्शंस आए हैं, इसके साथ साथ कुछ और भी सिग्मोइडल फंक्शंस हैं जो मैं आपको बता देता हूँ. फॉर एग्जांपल एक और फंक्शन है हमारे पास tan hyperbolic x, और this is basically written as x minus 1 and ex plus 1. Let's try this in the MATLAB. हम एक और फंक्शन 10t function 2 is equals to exponential x minus 1 divided by exp x plus 1. We need dot operator, so let's make it like this. So yeah, and then we figure number 2, and then we plot x comma function 2, right? So let's see what we get. Yeah, so yeah, this function is function 2 and we did function 1 here. ठीक है, so इन दोनों ये tan h का है राइट साइड के ऊपर figure 2, और this is the sigmoidal function, and they are quite similar to each other, right? So अच्छा, एक ये भी फंक्शन है जिसका हमारे पास जो ग्राफ है, this also provides us the graph like this one. ठीक है, ये tan h का ग्राफ हमारे पास है. By the way, अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, if you take the derivative of this d tan hyperbolic divided by dx, so that will give us a graph like क्योंकि इसका जो है वो डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है, so the graph will be something like this one. ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है slope goes to like 0, यहाँ पे भी slope tending towards 0, or gradually slope increases and then decreases. ठीक है, यहाँ पे आपके पास slope increase होता है और उसके बाद यहाँ पे slope decrease होता है. So this is the derivative of that one. What about कौन मुझे बताएगा कि ये जो हमारे पास ये वाला फंक्शन था RELU rectilinear function, it was till 0 for example and then was a straight line. अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो मेरे पास क्या प्लॉट आएगा? बाय द वे, इन फंक्शंस को लेने की एक बहुत बड़ी वजह है. अभी मैं उन मेन पॉइंट्स को मेंशन करता हूँ कि व्हाट आर द पॉइंट्स, लेकिन अभी मुझे आप ये बताएं कि डेरिवेटिव क्या बनेगा. एनीवन? इसको मैं एक्सटेंड करूँ कि ये 2 4 -2 -4, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? जी, हुमायूं और एनीवन? अगर इसमें डेरिवेटिव लूंगा तो 0 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 का डेरिवेटिव इज 0, और फॉर दिस डेरिवेटिव it will be exactly 1. ठीक है, so इसका डेरिवेटिव आपके पास ये वाला फंक्शन बनेगा और इसका डेरिवेटिव आपके पास ये वाली बनेगी.
अच्छा, इनका फायदा क्या, मैंने डेरिवेटिव भी क्यों इसको प्लॉट किया, उसकी वजह क्या है. नाउ देयर आर फ्यू पॉइंट्स आई वुड लाइक टू मेंशन हियर. सिग्मोइडल फंक्शंस के लिए नंबर 1 एक तो ये है कि दे आर बाउंडेड. ठीक है, तो इनफाइनाइट नहीं होता है. दूसरा डिफरेंशिएबल है. डिफरेंशिएबल का होने का हमको फायदा ये है कि हमने जितनी लर्निंग फंक्शन करनी, लर्निंग इज बेस्ड ऑन ऑप्टिमाइजेशन. और ऑप्टिमाइजेशन में वी एक्चुअली आर लुकिंग फॉर द मिनिमम और द मैक्सिमम पार्ट्स, जो कि आपको डेरिवेटिव से पता चलते हैं. सो डिफरेंशिएबल जो है ये हमारी लर्निंग फंक्शन में हमें फंक्शन ही ऐसे चाहिए होंगे जो बाउंडेड भी हो और डिफरेंशिएबल भी हो. और तीसरी बात ये कि ये आपके पास दे आर द रियल फंक्शंस. तो ये रियल इनपुट लेंगे. ठीक है, रियल इनपुट लेते हैं और ये आपके पास रियल ही आउटपुट देंगे. तो रियल आउटपुट की वजह से दे कैन टेक डाटा फ्रॉम रियल वर्ल्ड, रियल डाटा ले सकते हैं एंड दे कैन गिव आंसर्स फॉर द रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन. तो ये बज़ाहिर तो बहुत कॉम्प्लेक्स नजर आते हैं, बट दे आर डिफरेंशिएबल, दे आर बाउंडेड एंड दे आर रियल. तो ये इनकी तीनों ऐसी कैटेगरीज हैं, दे हेल्प अस कि हम इनको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में यूटिलाइज कर सकें. ठीक है, सो वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर एट 12 आई थिंक 30. सो तकरीबन 20 मिनट का फिर अब हम ब्रेक लेते हैं. ओके.